वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी। अबे जब वो इंस्पायर्ड मी ब्रो। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और भारतीय विद्यापीठ का कोई तोल नहीं, कोई तोल। मुझे समझ में आ गया तुम्हें हिंदी टर्न ऑन करती है पूरी टका के। मैं सब बोलता हूं, फिक्र मत करो, समझ जाऊंगा मैं। जो मेरे मन की भावना है, जैसे कोई तिनका नर्मदा माई में बहता 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 किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसे सिद्धू आज आप सबके बीच में आके महसूस करेगा। टंके की चोट पे मैं ये कहता हूं कि पतंगराव जी कोई शख्सियत नहीं थे, एक संस्था थे, संस्था। पीढ़ी दर पीढ़ी उनका काम दुनिया को याद रहेगा, क्योंकि शिक्षा कामधेनु गाय है, हर इच्छा को पूरा करने वाली। ये वो धन है जिसे दुनिया में कोई चुरा नहीं सकता, विदेशों में भी चोरी नहीं होता, जो कुरूप को सुंदर बना देता है। और सच पूछो, इंसान को आत्मनिर्भर बना देता है। किसी भूखे को रोटी दे दो, उसे दोबारा भूख लगेगी, लेकिन किसी को शिक्षा दे के आत्मनिर्भर बना दो, वो 1000 लोगों को रोटी खिलाने लायक हो जाता है। 1983, I'm going to be rewinding myself to the era of Kapil Dev. You all know the great Indian all-rounder Kapil Dev. My first test match, Kapil Paji took 9 wickets. It was a world record, total euphoric feeling. The whole world was so happy. This was the first time that a Indian fast bowler had taken 9 wickets. करीब 300 journalists converged on to Ahmedabad, which was such a great occasion. उन दिनों में टेस्ट मैच में रेस्ट डे होता था। So 300 लोग वहां कपिल पाजी को रेस्ट डे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट करते हैं। एंड आई गिव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। मैं कहा, पाजी आप अंग्रेजी जबान को मर्डर कर देते हो, हर आदमी में कोई ना कोई कमी होती है, वहां बाउंसर लगेंगे, मत जाओ वहां पे। रेस्ट डे को मीनाक्षी शेषाद्री की पिक्चर लगी है, हीरो, वो देखने चलते हैं, आप बच लो इस बात से। तो मेरी तरफ देख के कह रहा है, सरदार पंजाबी में, तू क्या सोचता मैं डरता हूं? वट कर दूं मतलब कपड़ा निचोड़ दूंगा मैं। एंड आई एम थिंकिंग यू डोंट मर्डर अ मैन हु इज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। एनीवे, वी वेंट देयर, देयर वर 300 pressmen in that gallery, space for 250, and the press conference started. And Kapil Paji knew nothing about English. He would murder the English language, I'm telling you that. And it starts, Mr. Kapil Dev. मैं क्या, मर गए पाजी। Mr. Kapil Dev, why can't we produce another Kapil Dev? मैं क्या, गए भाई, काले अक्षर वाले कार्ड छपेंगे, कपिल देव चढ़ गया घोड़ी। मैं क्या, गए। Why is it that a country of 1 billion cannot produce another Kapil Dev? Why can't we produce another fast bowler like you? बोलते जब तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन आया, मैं क्या, ले भाई, हो गया काम पाजी का। And he gets up. So ladies and gentlemen, मैं क्या, लेडी तो है ही कोई नहीं, पाजी थे पंजाबी ऐसे। I tell him, and he suddenly looks at it, shoos me down. Again that question comes, why can't we produce another Kapil Dev? Says, ladies and gentlemen, my mummy is 62-year-old, my papa is dead, you can't produce another Kapil Dev. ठोको मत रोको। तो Kapil Paji came from a very humble background where English was taught in class 6. He came from a very, very humble background, and I have seen him compete with Kapil Paji competing with Yashpal Sharma. दोनों एक जैसे ही थे, अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो दोनों की कंपटीशन होती थी, A for apple, B for balla, C for kutta, D for dollar. This is how they would compete. But look at this man. I came from a very proficient English speaking background, a public school background. I never had the guts.
to face that kind of a press conference. And here was a man who knew nothing about English. He challenged those people, gave them a befitting answer, and then he asked me. When I came, I died laughing. And then when I came back, he said, "Sardar, कोई और सवाल पूछना?" मैं कहा, मरना किसी ने आपको सवाल पूछ के पास. There's nothing good about it. It's your thought process. Your thoughts are the real interpreters of your actions. You are what you think. तुम इंसान को डंडे से नहीं बदल सकते, शिक्षा से थोड़ा बहुत बदल सकते हो, लेकिन तुम अगर किसी इंसान को बदलना हो तो उसकी सोच से उसे बदल सकते हो. हंस और बगला मानसरोवर में इकट्ठे रहते हैं. हंस मोती खोजता है और बगला मछलियां खोजता है. दोनों की सोच में अंतर है. सोच ऊंची, बंदा शहंशाह, शाहों का शाह, और सोच नीची. कौन कहता है? सिद्धू कहता है ताली ठोको, खुद ही ठोक रहे हो. It's about that thought process. Fear is the dark room in which negatives are developed. It multiplies faster than rabbits. It kills a youngster. It is the greatest deterrent that you'll ever have in your life. This fear of failure is the biggest difference between a champion and an ordinary person. Courage is not the absence of fear. Everybody fears. दानवीर करण को जब वो अर्जुन से लड़ने जा रहा था, मद्र नरेश ने कहा था कि तुम्हें भय नहीं लगता, तुम एक अजय रणधीर रणभट्ट योद्धा से लड़ने जा रहे हो. एंड दानवीर सेड, मद्र नरेश वो काठ के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता. आई एम नॉट अ वुडन वॉरियर, दैट आई एम नॉट अफ्रेड. लेकिन मेरा डर मुझे जागरूक रखता है, लेकिन मेरे आत्मविश्वास को कुरेदता नहीं. करेज, it means courage is not the absence of fear, it is the conquest of fear. That is what it is. And if you can conquer your fears, you will be champions. There's nothing that will actually separate you from being a great champion. 1987, we toured the West Indies, my first tour to the West Indies. सचिन तेंदुलकर का दूसरा इतना सा बालक, 16 साल का, घुंघराले बाल, शेरी कैसा है तू? You know, छोटी सी आवाज लेकिन बड़े काम. And we got caught on a wet pitch. And these are things that have happened on the ground. So you will believe in these. And see how champions conquer situations. See how champions conquer adversity. So here we are playing in the West Indies. रात को सपने में भी कर्टनी वॉल्श आता था. ऐसे ऐसे करके मैं उठ जाता था. कर्टनी वॉल्श, पैट्रिक पैटरसन, एम्ब्रोज, 6 फुट 8 इंच, कोई 6 फुट 8 इंच से नीचे था ही नहीं. And we get caught on a wet pitch. Absolute गीला पिच. बारिश हुआ, उन्होंने कवर्स उठाया, गीला पिच. गीले पिच पे मैच शुरू नहीं कर सकते, because it's very difficult to play. मैंने अजरुद्दीन को कहा, मैं कहा मियाँ तेरे से कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ, तू टॉस जीत जाना. हाउ हाउ हाउ. मैं ठीक है भाई. अंदर गया मियाँ, उसने उछाला सिक्का, तो मुझे कहता बैटिंग कर. मैं कहा तेरी ऐसी की तैसी. And I'm cursing him, wearing those pads, and I'm walking out with Tendulkar to bat on a wet pitch against Courtney, Ambrose, Walsh, all those big guns. जाते जाते मैं तेंदुलकर को पूछता हूँ, मैं कहा यार टेंडलिया क्या करेंगे, गीला पिच है. So he looks at me, says खेलेंगे. मैं कहा मुझे भी पता खेलेंगे, पकौड़े थोड़ा तलने जा रहे हैं वहाँ पे. So he walks out with me and does that. ठीक है. The first over that we face is Ambrose bowling, 6 foot 8 inches. स्क्रीन के ऊपर से हाथ आता था उसका, ऐसा लगता था बादलों में से बॉल आ रही है. I swear to God, ऐसा लगता था बादलों में से बॉल आ रही है. You know, the first over 7 balls he bowled. The scoreboard read 1 run. नो बॉल का ही मिला, नो बॉल का ही मिला. 7 बॉल थी, मेरे शरीर के अलग अलग 7 कोनों पे लगी, बस बल्ले पे नहीं लगी बॉल. हाँ, इधर इधर उधर. एंड आफ्टर The over, I walked up to Tendulkar. लोग सोचते हैं पता नहीं क्या बड़ी टेक्नोलॉजी डिस्कस करते हैं जब 2 बैट्समैन जाके बात करते हैं ना. मैं बताता हूँ, मैं पोल खोलता हूँ, अभी बताता हूँ क्या बात करते हैं. So I walked up to him. मैं कहा टेंडलिया, अरे मैं कहा इज्जत का फलूदा हो गया रे. So he looks at me, क्या रे शेरी खेलेगी? मैं कहा खेल रहा हूँ गुरु, लेकिन गीला पिच है, बॉल टप्पा पड़ते ही शरारत कर रही है. रुक के आ रही है, थम के आ रही है, मिट्टी मेरे मुंह पे आ रही है, टप्पा पड़ते ही बॉल शरारत करती है. हाँ रे खेलेंगे. मैं कहा खेल, तू खेल. उधर चले गए जी, इधर से बिशप, इयन बिशप.
एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, भाई ठोको ठोको मत रोको. In comes Bishop from the other end. और मैं च्युइंगम चबा रहा हूँ और उसको देख रहा हूँ. जितनी मेरी जांग है उतना उसका डोला है. 6 फुट 9 इंच का बंदा है, परकिन इंजन की तरह धक 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 धरती कांप रही है और मैं देख रहा हूँ उसको क्या आ रहा है भैया. And he delivers the ball. The moment he delivers the ball and I look at Tendulkar, the chewing gum pops out of my mouth. थप करके ऐसे करके तेंदुलकर भाग रहा है उसकी तरफ. You know, he bowls at 160 kilometers per hour. And here is a young fellow who's running towards him. And he takes it on the full toss. Bishop delivers the ball. He takes it on the full toss. Thap, सामने छक्का. वो मैं क्या भाई? And I walk up to him. मैं क्या टेंडिया? मैं क्या ये क्या किया? कह रहा शेरी तू बोला ना टप्पा पढ़ के बॉल शरारत कर रही है, मैं टप्पा ही नहीं पढ़ने दिया रे. ठोको ठोको मत रोको. That is where champions come from. Here is a young boy, 16 and a half, who has no fear. And that is what a true leader is all about. You've got to be leaders in tomorrow's world. And you've got to lead from the front. What is a leader? A leader converts weakness into strength. He converts obstacles into stepping stones. And he converts disaster into triumph. That's what a leader is all about. And if you want to be a leader, you'll have to be like that. And as I progress, I will clear the fog in your mind. And I will clear the doubts in your mind. Doubt creates a mountain and faith tunnels through it. You must have faith in your ability. And this is exactly what it is. बंदा उस कस्तूरी के मृग की तरह है जो जंगलों में भटकता है उस खुशबू की तरह, उस खुशबू को ढूंढने के लिए जो उसकी नाभि से आती है. You don't have to search anywhere. It's all within. But how? Through your thoughts. Positive anything is better than negative nothing. It is this positive energy which will make you champions. It is this positive thought process. And what does a champion do which is separate from the others? He conquers adversity. मुश्किल वक्त में आम आदमी बेचारा बन जाता है. My professor did not teach me well. My mummy papa was not there. You know, sympathy is for the weak and the weak go to the cooking pot. There's no scope for being a bechara in life. You know, एक पत्थर चोट खा के कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सह के शंकर शंकर हो गया. It is about conquering adversity. It is about, you know, being through situations which are tough and overpowering those situations, not succumbing to those situations, not lying flat in front of those situations, you know. And that is what courage is all about. Sachin Ramesh Tendulkar, again, I come back to him. Pehla tour, you will not remember, the first tour that Sachin Tendulkar undertook was with me to Pakistan. He was 15 and a half and he was pitted against Waqar Younis, Wasim Akram, Wasim Akram, all those people. और पहला मैच Sachin Tendulkar scored a blob. The first test match he played, you will be surprised to know that he scored a 0. The duck. The next innings he scored a 7. The second match he scored another 15 and a 3. He was dropped from the Indian team on the Pakistan tour, criticized very, very badly. That here is a green horn, a chicken thrown in front of the wolves, all that. It was written about Sachin Tendulkar on the Pakistan tour. And he was dropped from the third test match, and in the fourth test match, again he was brought in. We had drawn all those 3 test matches. I was very recently married before I undertook that trip. 3 मैचों में मैंने 2 सेंचुरी बनाई थी और पूरा शान से खेल रहा था. And then the last test match was on a green top pitch. इमरान खान को ये था कि भैया ये मैच जीतना ही है, किसी तरीके से जीतना है. सो उसने घास छोड़ा इतना इतना मूंछों वाला घास. He'd instructed the groundsman कि घास नहीं काटना. You could have grazed a few cows and buffaloes on that and they would have survived for 2 weeks. I'm telling you that, right? 4 days we survived. And the last day we were tottering at 22 for 4.
chasing a total of 300, 22 for 4, first hour of the last day, घास वाली पिच, और मैं बैटिंग कर रहा हूं. बड़ी कोशिश की मैंने आउट होने की, पर नहीं हुआ. कहीं इधर से निकल जाए, कोई उधर से निकल जाए. 4 down at 22 for 4, and I was thinking whether I'll see my wife again or not. इतनी तेज गेंद डाल रहा था, and Ravi Shastri was at the opposite end, 22 for 4, and suddenly Wasim Akram bowls a bouncer at me. Thap, ऐसे करके. I do this. And Ravi Shastri comes up to me, says, very well left sits. मैं कहा मुझे तो दिखी नहीं गुरु. I just didn't see it. It was so quick. And the next over, Ravi Shastri gets a snorter of a delivery, a bouncer, top gloves pe laga, and he gets out. And he's walking past me. Oh, I'm unlucky. I should have gone to the church. And I'm thinking, you're the luckiest man, boss. Out hoke bahar ja raha hai. मैं अभी भी वसीम अकरम को झेल रहा हूँ. And suddenly I see this young Tendulkar walking up. और मेरा चेहरा एकदम से खिल गया. मैं कहा यार तेंदुलकर है, तेंदुलकर के बाद कुंबले शुंबले है, तो साइकिल स्टैंड है, एक को धक्का मारो तर 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 सब नीचे जाएंगे. मैं कहा कोई चक्कर ही नहीं, टीम आउट हो जाएगी. एंड आई थॉट यार कोई चक्कर नहीं है. एंड आई एम नॉट थिंकिंग एट दैट टाइम दैट हियर एम आई प्लेइंग फॉर अ कंट्री. आया सचिन तेंदुलकर, ही सेज अरे शेरी. मैं कहा शाबाश शाबाश. एंड आई एम थिंकिंग गया भैया, गया बलि का बकरा है, गया. सो द फर्स्ट बॉल ही फेसेस कट्स हिम इनटू रिबन्स एंड सुप अंदर से निकला. मैं कहा गया भैया गया. And the next ball is a vicious bouncer. And Tendulkar tries to hook that ball. The ball ricochets of the inside edge, नाक पे सीधा 160 किलोमीटर ठप यहाँ पे नाक पे. And he goes down, धूम करके ऐसे पूरा. मैं the first thought that comes to my mind is मैं कहा मर गया छोरा. And I run towards him and I look at Tendulkar. It's a gory sight, blood splattered face. पूरी तरह से खून से भरा हुआ चेहरा है. वहां चल रहा. मैं ले भाई क्या ये नहीं खेलता क्रिकेट दोबारा. एंड आई शाउट फॉर हेल्प एंड आई शाउट फॉर डॉक्टर अली ईरानी. प्लम्प इज अ पार्टरिज, ही इज वॉकिंग इन. उसका इलाज तेंदुलकर की बीमारी से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता था. सेरेडॉन की टेबलेट दे दी और सर के ऊपर बर्फ की सल्ली लगा दी. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अली वुड डू. एंड ही वाज कमिंग रनिंग इन. एंड मैं क्या गया भैया, अब तो पक्का ही गया. उसने बर्फ लगाई ऊपर एंड सेरेडॉन मुंह में डाली. Tendulkar was not even moving. Blood splattered face, nose टेढ़ा नीला पूरी तरह हुआ. And I'm walking towards the other end. And before I reach the other end, I hear a squeaky voice. मैं खेलेगा. मैं मुड़ा ऐसे करके ठपाक करके सीधा. I looked at Tendulkar. नाक में से रुई लटक रही है नाक में से. It's a blood splattered face and he's shooing off डॉक्टर अली ईरानी. एंड ही सेज मैं खेलेगा. उस्ताद मुझे लगी होती ना तो मैं शाम को 6 बजे ही आंखें खोलता. सीरियसली मैं बोल रहा हूँ. इट वॉज सो फेरोशियस दोस्त बोले. ओह मैं कह रहा हूँ इतनी तेज गेंद कर रहे थे वो, और इस तरह से खूंखार होके गेंद कर रहे थे. एंड हियर इज दिस यंग बॉय, ही वॉक्स अप टू मी, ही सेज शेरी. आई सेड व्हाट. ही सेज इंडिया खतरे में है, जान लगा के खेलेंगे सिद्धू, जान लगा के खेलेंगे. कैन यू इमेजिन? A 16-year-old boy who has been bowled out for a 0, for 16, for 7, and here is a Sardarji who's thinking about his wife and who scored 200s, and he's telling him जान लगा के खेलेंगे. जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, हिंदुस्तान. Here was Sachin Ramesh Tendulkar facing the most fierce fast bowler Waqar Younis. And I'm standing right in front of it. It inspired me so well. मैंने कहा यार सरदार असरदार बन के दिखा, अड़ जाएंगे आज, छोड़ेंगे नहीं. And I patted his back and I was so amused. मैं हैरान रह गया कि ऐसा भी कोई कर सकता है. And he took guard. वकार came in and I knew कि अगला बॉल यॉर्कर आने वाला है. वो पैर के नीचे लगेगा, या टो गई, या बैट गया, या विकेट गई. मुझे पता था. And he stands right behind, एक फुट पीछे खड़ा है. एंड वकार बोल्स दैट यॉर्कर एंड ही हिट्स इट स्ट्रेट पास. थप करके मारा मेरी तरफ. 160 उसकी तरफ, 180 मेरी तरफ. मैंने यूं किया, नीचे से गई, ठा करके होर्डिंग में लगी, और सारा सियालकोट का स्टेडियम खड़ा हो गया. सारा सियालकोट का स्टेडियम खड़ा हो गया. एंड Sachin Ramesh Tendulkar hit him for 3 boundaries in that over, and he walked up to him. And मुझे आज भी याद है, उसके पास गया and वकार stared at him. मुझे घूरता तो मैं तो ऊपर सूर्य चांद सितारे दिखता था.
Tendulkar walks up to me and says, "Tuja makhan re, tuja makhan." Exactly, that is what exactly Tendulkar said. And yours truly, at that point, completely turned on its head. The match, what happened to the match? Tendulkar scored 57 not out in that innings. Yours truly, 97 not out. Not a single wicket fell on that day. That is how champions behave. For the first time, I saw Sachin Ramesh Tendulkar in a test match scoring a 50, and that is where Sachin Tendulkar catapulted. Life is not going to be easy. Life is not a bed of roses. Adversity will come time and again, knock at your doors, challenge you, always. And believe you me, if you want to conquer adversity, एक गुड़ती देता हूं आपको, एक बहुत जबरदस्त गुड़ती देता हूं, और आज मेरी टॉक जो है ना, आपको याद रहेगी सारी उम्र. आप जब भी एडवर्सिटी आए, आप ये समझ लेना कि परमात्मा ने आपको एक मौका दिया है 10 गुना बड़ा होने का, 10 गुना बड़ा होने का, 10 गुना संवरने का. सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद. Always remember that adversity makes you what you are. The second thing that I will come to before I touch the adversity factor is almost all absurdity of conduct arises when people imitate others. When you imitate someone, you can never be the other person, and you lose yourself in the process. जिंदगी में अलग अलग कुओं के पानी का स्वाद अलग है. जो ध्वनि सोने के बर्तन से आती है, वो कांसे के बर्तन से कभी नहीं आएगी. हर आदमी अलग है. दो इंडिविजुअल्स के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे के साथ नहीं मिलते. खरबों लोग हैं, खरबों लोग हैं. You have to be yourself. You have to be what you want to be. I met Shah Rukh Khan 25 to 30 years ago, and he used to call me Sixer Sidhu at that time. सिद्धू साहब, मैं आपके छक्के देखने आया हूं. मैं कहा यार सिक्सर सिद्धू मत बोला कर, बाकी जो मर्जी बोल, क्योंकि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो तो बड़ा काम खराब हो जाता है. So he comes up to me and he says, Modern School Ground. And in those days he was acting in a serial called Fauji, and there was another one which was called Circus. So मैंने कहा यार, I'm a huge fan of yours, brother. What do you intend doing? He told me, sir, Bollywood. मैं कहा यार बॉलीवुड में जाना है, कट थ्रोट कंपटीशन है, they'll eat you like a sausage for breakfast, boss. तू बॉलीवुड में, बॉलीवुड में तेरी मम्मी बॉलीवुड में नहीं, तेरे पापा बॉलीवुड में नहीं. How will you succeed in Bollywood? There is cutthroat competition, I told him. And he replied in one line. He says, Sidhu Saab, I don't compete with the world, I compete with myself. That is the key to all success. Why are you jealous when somebody else scores good marks? Why are you trying to pull others down? दुनिया में सबसे बड़ा रोग, I always say, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, इससे बड़ा रोग ही नहीं दुनिया में. Why are you bothered about what the world will tell you, or what the world will say about you? It's a disease, and 99% of the people are smitten with that disease. सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता. ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता. Never bother about what people think about you, what people say about you. Never ever bother about you. Always be accountable here to your own conscience. A good conscience is probably the best tranquilizer that you will ever have. दुनिया को जवाबदेही मत हो, अपने भीतर को जवाबदेही हो जाओ. और जिस दिन तुम अपने भीतर को जवाबदेही हो गए और तुम्हें ये रोग नहीं रहा, दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, उसी दिन तुम बड़े हो जाओगे. When you're criticized, always remember that you are worth it, you are important. क्योंकि पत्थर सिर्फ आम के पेड़ को लगते हैं, पत्थर सिर्फ उस पेड़ को लगते हैं जो फलों से लदा हुआ है. नीम के पेड़ को कभी कोई पत्थर नहीं मारता, मरे कुत्ते को कभी कोई लात नहीं मारता. If you're criticized, you're very important. Otherwise, nobody will ever criticize you. And that is the essence. People ask me, Sidhu Saab, आप पॉलिटिशियन बन गए, आपने टीवी भी कर लिया, आपने कमेंट्री भी कर ली, आपने लाफ्टर चैलेंज भी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आप 4 बार MP बन गए. What is the secret to your success? That's what people ask me. I tell them it is passion and not pedigree which wins you in the end. People ask me, what is passion, sir? I tell them, junoon.
People ask me, what is Junoon, sir? I tell them, live one idea, breathe one idea, sleep one idea, talk one idea. Let that idea be a tidal wave. Let that idea engulf every pore in your body, and every pore in your body must sing that idea. You will be 100% successful. 100%. You've got to live one idea in your life, make it your goal, and only then will you succeed. Otherwise, there will be no success. In 1983, I was thrown out of the Indian team. I was thrown out of the Indian team and did not find a place in 55. I was a member of the Indian team, and then I did not find a place in the 55 people who were selected for India. And one fine morning, I came out of the bathroom and I saw my father weep like a baby. I'd never seen. He was Advocate General of the state. He was MP. He was a very renowned politician at that point of time. And I saw him cry like a baby. And he hid a newspaper under the pillow. I was flabbergasted. I went to the other room and came back once he left for the courts. And I pulled out that newspaper. It was the Indian Express. And on the front page of the Indian Express was an article by Rajan Bala. And it wrote, Navjot Singh Sidhu, the strokeless wonder. A man who could not even hit the ball hard. A strokeless wonder, that article dubbed me. Front page of the Indian Express, right? Huge story. The press is very strong. It can infuse life in a corpse and vice versa. A live and a kicking man can go into his grave if the press wants it. And that is exactly what happened. I was not selected in the 55 that were selected that day for 4 teams. And something snapped within me. I'd never seen. All my life was a tribute to my father that I wanted to be an international cricketer. Every day I would cheat my father. He would wake me up at 6 o'clock. I would go to the other room, bribe the servants, tell him, बताना मत, 2 घंटे सो के गीली टी शर्ट पहन के फिर वापस आ जाना. फादर ने पूछना कितना राउंड भागा? 10. थक गया? हाँ, सो जा. Again I would sleep. Every day I would cheat him. But that day, my life changed. That critical analysis by Rajan Bala changed my life completely. It turned me on its head. I took sacred vows. I took water in my Anjali and I poured sacred vows to the Ganesha Lord. I said, Ganapati, today is the first time that I am taking sacred vows. If I am Sardar Bhagwant Singh Sidhu's son, I will play for India one day. And this is the idea that I'm going to live from now on. And you will not believe. Early in the morning, I would wake up the servants at 4 o'clock. I would take them to the ground. I would water the pitch myself. I would roll the pitch myself. Have 1 square meal a day. And I would hit 125 sixes every day without fail. My hands would bleed. My hands would bleed. Blood would come all over the hands. Chale pad gaye the, khoon nikalta tha haathon mein se. And yet I invented new gloves. With rui in it, it would soak all the blood. In 3 months, young fellows, my hands were like iron. Patti बांध के भी छक्का मार सकता था मैं. ऐसा हो गया था. For 4 years, there were no colored clothings that I wore. The article of Rajan Bala was in my wardrobe. I pasted it in my wardrobe. It was there in my wardrobe for me to see it every day. And every day that article would inspire me, and every day that article would suggest that I had to play for India. For 4 years, there was no colored clothing. For 4 years, there was no parties. There was just 1 day of rest. I would come back from the ground at 6 or 7 in the night. There were halogen lamps installed in my backyard. And, there were young fellows who would bowl from 15 yards, from 14 yards. I would give them my pocket money as chocolates. They would bowl from 15 yards. They would bowl faster than Malcolm Marshall. 12 o'clock in the middle of the night, food would be laid on the table, but I would be sleeping with my pads on. I would get up with my pads on. 2 years henceforth, my father passed away. Part of me died. But I carried on with that dream that my father saw for me. I carried on and on and on. After 4 years, I got the first opportunity. My mentor, Kapil Dev, called me for the Sheesh Mahal tournament. Brilliant performance. Took me to the World Cup. And once I went into the World Cup, 5 50s in a row, 42 sixes. It's a world record, standstill date in the Limca Book of Records. And once that world record was set, Kapil Paji took me to Sharjah, the second tournament. And Ravi Shastri comes up to me and he throws a newspaper at me. He says, Sids, there's something wonderful written about you. Have a read. I said, what? He says, this is the Khalij Times. Have a read.
So he threw that newspaper to me, and I took it. And the newspaper, the same writer, Rajan Bala, on the front page of the Khaleej Times, writes from strokeless wonder, Navjot Singh Sidhu is now sixer Sidhu, a palm groove hitter. Life comes back full circle. There's an order of perspiration to every successful human being in life, young fellas. The only thing that you will get without effort is dandruff. Haslo, partari thoko. You know, I've got nothing to offer you but blood, sweat, toil, and tears. I've been myself. I've enjoyed what I wanted to do. It has never been a burden. जिंदगी में जो कार्य आप enjoy करोगे वो successful होगा. चाहे फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो भी successful होगा. लेकिन जो कार्य बोझ बन जाएगा वो successful नहीं होगा. I've been myself. I've never imitated anybody. Whether it was commentary, whether it was cricket, whether it was being a politician, I have never changed. I have adored people, but been myself. The story that changed my life completely is the story of the World Cup 1987. From a non-entity, from a strokeless wonder, Navjot Singh Sidhu playing the World Cup 1987. And, you know, when I played that World Cup, the first match was with Pakistan. So Pakistan ke saath pehla match tha, and I got out early. And my coach, when I was walking out, I was trying to hit a six. My coach, Gucci Paji, greeted me on the boundary line. He says, "Tere liye Patiale di pitch le aava." You know, you abuse 10 times in English and you do it once in Punjabi. That once in Punjabi is much better, right? So he gave me the choicest of all those rockets. And he says, "Tere liye Patiale ki pitch leke aau? Should I bring a Patiala pitch for you? This is not a place to hit sixes," he told me. यहाँ खेलना है तो हौले हौले, पोले पोले and थल्ले थल्ले. हौले हौले, पोले पोले and थल्ले थल्ले. So it got ingrained in my system कि हौले हौले, पोले पोले, थल्ले थल्ले खेलना है, भाई छक्का नहीं मारना. And the first match that I played was against Australia. 1987, 80,000 people in the stadium, 90,000 people outside, 1 billion people watching, not a soul bats an eyelid. 260 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने. पहला मैच मेरा वर्ल्ड कप का 260 बनाए ऑस्ट्रेलिया ने. और हमारा एक चेस शुरू हुआ. मैंने एक कैच भी पकड़ा. नॉट दैट आई कॉट द बॉल, इट वाज एन एक्सीडेंट. द बॉल कॉट मी. ताड़ी वाड़ी बड़ी बजी. चलो जो भी हुआ. I go in and I am sitting in the dressing room, and suddenly Maninder Singh shouts at me. Gavaskar and Srikanth have started to open. You all remember Srikanth? Yeah? What did I tha? He never knew how to defend. So suddenly Maninder Singh shouts, "Sardar!" I go, "Huh?" He says, "Gavaskar out." I go, "Huh?" And I'm shaking inside. Pasine aa rahe hain air conditioned room mein. And suddenly I get up and I walk out. And the entire Chennai crowd stands right in front of me. "Come on, Sidhu, sixer, Sidhu." Fresh spirits infused in my veins. I walk out like a general. मैं क्या बात कर रहा है, छोड़ना नहीं गोरों को, ऐसी तैसी इन्हां दी वट कर दूंगा. And I'm talking to myself. And I'm walking out like a general, right? And suddenly the colossal figure of Gucci Paji comes right in front of me, my coach. Hole hole, pole pole, and thalle thalle. मैं क्या मर गए भैया. Hole hole, pole pole, pole thalle thalle. And Peter Taylor is bowling. And Alan Border sees this yellow streak in me and he surrounds me with 11 people close. एक भी पीछे नहीं. और मैं सिक्सर से दूं. और पीछे एक बंदा है. And he surrounds me with, और मैं टुक टुक कर रहा हूँ. For the sake of Gucci Paji, I'm trying to take a single. And I'm trying to push it towards mid-wicket. Dean Jones खड़ा ठाए करके throw. Brilliant fielders. Mike Valletta ठाए करके throw. 5 बॉल निकल गई. कोई सिंगल नहीं. सब घेरे में इधर. श्रीकांत को सिंगल लेना ही नहीं आता था. वो तो चौवा मार के वेट डा, एक चौवा मारा है, वेट डा करके. And the ball is back in my court. The crowd which is saying sixer Sidhu, suddenly saying boo, boo. मैं कह ले भाई सरदार तेरी इज्जत का फलूदा पक्का होगा. अब सिंगल ले ले गुची पाजी के लिए. And I push towards point and I run towards Gucci Paji and I run towards Srikanth. I say, "Yes, come on Srikanth, run. One." He's got the bat behind him and he said, "No, wait da." I turn myself like a lorry and I dive for my life. You know. And I look at the umpire.
आंख में मिट्टी, नाक में मिट्टी, चारों तरफ. That was the first dive of my life, जान बचाने के लिए, right? Then the umpire said not out. The moment the umpire said not out, मैं गया भाड़ में जाए गुज्जी बाजी, वाहे गुरु जी का खालसा और वाहे गुरु जी की फतेह. वो बॉर्डर मेरी तरफ देखे कि सरदार में देवी आ गई है, हो क्या आएगी, व्हाट इज ही डूइंग? And I did this, वाहे गुरु जी का खालसा, and Peter Taylor bowled the next ball. मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, it was like a gunshot. गगन चुंबी छक्का. गेंद इतनी ऊपर गई एयर होस्टेस की पप्पी लेके नीचे आती थी. Miles out of the ground, miles out of the ground, miles out of the ground. 1 over, 4 sixes. That over, 4 sixes. I was batting 44. In the next 4 overs, I was batting 44. 6 sixes, 2 fours, not a single, not a double. Gucci Paji had gone out of the window. I scored 72 in that innings, 5 50s in a row, 42 sixes. Limca Book of World Records. Can you imagine? So, bro, I've got nothing to offer you but blood, sweat, toil, and tears. That is the story of Navjot Singh Sidhu. That is the story of every champion in life. That is the story of every achiever. God bless you all and thank you very much for having given me this opportunity. Thank you. God bless you. And we are here for a very important political thing. You know, Rahul Bhai is my hero. This is for the first time that a leader has asked young India to give their own opinions. Young India to say, what is the kind of youth policy that you want? Always we have imposed on the young people and say, yaar, tu doctor ban ja, tu engineer ban ja. पर आज तक कोई हिंदुस्तान में लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने कहा हो कि जाओ पूरा हिंदुस्तान घूमो और नौजवानों से मिलो और उन नौजवानों से पूछो उनको क्या यूथ पॉलिसी चाहिए. That is what separates him from the rest. I have never made it into a political function, but this is what we are here for, and this is the opinion that we want from you. What is it that you want in your great country? What is the youth policy that you want? What is it that you strive for? और उसी को देख के Rahul Bhai will announce the next youth policy of this great country in a month's time, and that is where I'm coming from. कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. सूर्य प्रमाण नहीं देता कि उसमें प्रकाश है. परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं. वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस ऑल. थैंक यू.